be able to share it with you. Yeah. Now, in the first numerical on Eutectic system, this is the alloy of bismuth and cadmium. Okay. So, in an alloy of bismuth and cadmium contains 25% cadmium. Okay. Determine the mass of Eutectic in 1 kg of the alloy if the eutectic composition contains 40% cadmium. ठीक है, लिखो ये क्वेश्चन. वेरी सिंपल है, बस इसके अंदर हमें ट्रिक जो है वो यूज करना है. Just write down this question. Done? Did you finish writing the question? No, ma'am. तो जो एलॉय था उसके अंदर 25% कैडमियम प्रेजेंट है और जो यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन है उसके अंदर 40% कैडमियम प्रेजेंट है. सो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डिटरमाइन? वी आर सपोज्ड टू डिटरमाइन द यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन, मतलब के तो हमें okay, I'm connected back. So let's see the solution. Hello. Hello, ma'am. Yeah, I'm there. Okay. आपको लेट ज्वाइन नहीं होना है, टाइम पे ज्वाइन होना है. मैम ज्वाइन हुआ था, वो स्क्रीन नहीं लोड हो रही. 115 का आज का एसडी लेक्चर भी मैं ही ले रही हूँ. हाँ, ये फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, द नोट्स प्रेजेंटेशन इज ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू. और जो UT2 होगा उसका क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाएगा, तो उसमें जितना क्वेश्चन बैंक दिया आपको उतना UT2 के लिए पढ़ना है. ठीक है. और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन यूनिट टेस्ट में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा. फॉलोड? तो ये आपको याद रखना है. नोट्स एवरीथिंग इज देयर, तो जो क्वेश्चन बैंक में दिया है वो आप पढ़ लो. दिस इज वन थिंग. सेकेंड थिंग, इन द आफ्टरनून वी हैव टू डू द कोर्स एग्जिट सर्वे. अटेंडेंस इज कंपल्सरी. एवरीबडी शुड बी प्रेजेंट एट 1:15 शार्प. ठीक है. ये एक चीज रहेगा. फिर हमें एक क्विज अटेंड करना है, वो हम लोग करेंगे. ठीक है. और जो भी रिमेनिंग पेंडिंग वर्क है, ऑल दैट वी विल कंप्लीट इट टुडे इटसेल्फ. So proceeding with the solution. Now, as given in the question, the alloy contains 25% cadmium. तो बिस्मथ कितना परसेंटेज में प्रेजेंट रहेगा बोलो? बिस्मथ कितना परसेंटेज में प्रेजेंट रहेगा? Exactly 75%. Okay. So let us calculate now. 1 kg alloy में there is 25% cadmium. So how much gram of cadmium is actually present in that 1 kg alloy? अब ये 1 kg alloy को ना मैंने उसको 1000 ग्राम में कन्वर्ट किया है. ठीक है. So 25% is 25 upon 100 into 1000 gram, यानी कि 1 kg. What will be the answer, students? 250. Correct.
Simple है, 250 gram of cadmium is present in the alloy. Let's see how much amount of bismuth is present. Can anyone tell me if it is 75% bismuth present, then it is 75 upon 100 75 into upon 100 yeah into 1000. 1000 ग्राम. तो एलॉय में 250 ग्राम कैडमियम है और 750 ग्राम बिस्मथ है. बट दे आर आस्किंग अस अबाउट द यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन. ठीक है. नाउ द यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन में देयर इज 40% कैडमियम व्हिच इज प्रेजेंट. तो ऑब्वियसली 60% बिस्मथ प्रेजेंट होगा. ठीक है. अब एलॉय के अंदर 250 ग्राम कैडमियम था, तो यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन के अंदर कितना बिस्मथ प्रेजेंट रहेगा, दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई इन टर्म्स ऑफ 250 ग्राम ऑफ कैडमियम. So this is what is given over here. Therefore, corresponding to 250 gram cadmium, the mass of bismuth is 250 into 60 divided by 40% of cadmium. This is how we are going to calculate the composition of bismuth in the eutectic. ठीक है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन किसका दिया था क्वेश्चन में? कैडमियम का दिया था. और हमें कितना ग्राम कैडमियम मिला एलॉय में? 250 ग्राम. So 250 into 60% of bismuth divided by 40% of cadmium. What is the answer? Hello? 375 gram of bismuth. Yes, exactly. So in the eutectic, there is 375 gram of bismuth. Therefore, let us calculate the mass of eutectic in 1 kg alloy. So 375 gram plus 250, which is equal to 625 gram of eutectic is present. Okay. This is how the simple calculation. बस यहाँ पे ट्रिक क्या लगाना है, क्वेश्चन में क्या दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है वो आप लिख लो. ठीक है. 25 अपॉन कैडमियम दिया है तो 250 ग्राम ऑफ कैडमियम, देन 75% ऑफ बिस्मथ इज प्रेजेंट. ठीक है. देन यूटेक्टिक में देयर इज 40% ऑफ कैडमियम व्हिच इज प्रेजेंट. ठीक है. तो सिंपल 40% ऑफ कैडमियम इज प्रेजेंट, तो द लेफ्ट ओवर इज 60% बिस्मथ. तो 250 into 60, simple cross multiplication है. 250 gram of cadmium into 60% of bismuth divided by 40% of cadmium will give me the mass of bismuth which is present in the eutectic. So mass of eutectic जो था 1 kg alloy में वो कितना था? तो 375 gram of bismuth plus 250. ठीक है. This is the mass of eutectic which is present. ठीक है. ये एक मेथड है करने का. दूसरा भी एक मेथड है जिससे हम यही न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. ये वाला मेथड समझा आपको? Yes, ma'am. ठीक है. Now let's see another method. दोनों भी कोई भी आप कर सकते हो. जैसे कि 25% कैडमियम है तो 250 ग्राम है. ठीक है. Now it is telling in the eutectic composition there is 40% cadmium present. 40% means how much? 400 gram of eutectic, 400 gram of cadmium is present in the eutectic. Similarly, the eutectic contains 60% bismuth है. ये CD नहीं है. ठीक है. Just let me change this. ठीक है. So it is coming to around 600 gram bismuth which is present in the eutectic. But they have told us to calculate mass of bismuth which is present in eutectic. So 600 into 250 same way. जैसे 60% को लेते हैं वो परसेंटेज को हम अगर ग्राम में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा. ठीक है. So same process. I think the first one is better for you. This is how we are going to do. Mass of bismuth present in eutectic is 600 gram of bismuth into 250 divided by 400.
Okay, so 375 gram of bismuth is present. So mass of eutectic is 375 ग्राम ऑफ बिस्मथ, जो न्यूली हमने कैलकुलेट किया है, और जो पुराना वाला कैडमियम था प्लस 250 which gives to around 625 ग्राम. Followed? Which one is easier? दोनों भी सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है. I think you can do the first one. ये फर्स्ट टाइप ही करो आप. Okay? Do step by step. What is given in the question, first you focus on that. मैम अपने यूनिट का क्या बोले थे मैम? यूनिट टेस्ट का वॉइस क्रैक हो रहा है बेटा, आपका क्लियर नहीं है. मैं अपने यूनिट टेस्ट का क्या बोले थे? क्या नहीं होने वाला? यूनिट टेस्ट का मैं ये बोल रही थी, क्वेश्चन बैंक इज प्रिपेयर्ड बाय आफ्टरनून, यू विल गेट द क्वेश्चन बैंक आल्सो फॉर द यूनिट टेस्ट. अभी जो लास्ट मॉड्यूल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो मॉड्यूल जो है वो मॉड्यूल बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. ओके, ओनली यूनिट टेस्ट में उसको पूछना है, तो उसका एक क्वेश्चन आपको आएगा सिर्फ यूनिट टेस्ट 2 में. ओके, जस्ट अ मिनट. An alloy of tin and lead contains 73% tin. ठीक है. Find the mass of eutectic containing 64% of tin. Do it in the same manner. जैसे हमने न्यूमेरिकल किया बिल्कुल वैसे ही आपको करना है. अब ये जो एलॉय है, टिन और लेड का एलॉय है, ओके, जिसके अंदर 73% टिन ही प्रेजेंट है. ठीक है. अब वो बोल रहे हैं ये एलॉय के अंदर जो यूटेक्टिक था उसके अंदर 64% टिन था. So find the mass of eutectic. So for finding the mass of eutectic, we need to find the mass of lead in eutectic first. तो लेड का जो भी वेट रहेगा वो 73% वाला टिन का जो वेट रहेगा उसके साथ में एड अप करके यू विल गेट प्रॉपर यूटेक्टिक कंपोजिशन. Now in the first lecture 36 students are only present, तो उनका ही attendance mark होगा. And I'll take a screenshot of your participant list. Same way, same method, no difference. So 73% tin. Then remaining will be how much? 27%. Correct, students? Yes, ma'am. So there is 1 kg alloy which contains 73% tin. That means उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, which comes to around 730 gram of tin. And remaining is 270. One minute, students. 1 minute. I have to just speak on 1 minute. One. Now over here in the first question, just थोड़ा सा हम इसको पीछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको एक क्वेरी आ सकती है अभी.
जो पहले वाला क्वेश्चन था ना वो 25% कैडमियम था जो कि बिस्मथ से कम था, ठीक है। तो वहां हमने क्या किया था, वी हैड टेकन इन टर्म्स ऑफ 250 ग्राम कैडमियम। इसका मतलब क्या है, जिसका परसेंटेज कम रहता है उसके करस्पॉन्डेंस में करना है। यू आर सपोज टू फाइंड द मास ऑफ द अदर एलिमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? यस समझ में आया? Yes, जैसे कि ma'am. यहाँ पे देखो 25% कैडमियम है और 75% बिस्मथ है, तो यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया यू टेक्निक में वो मास ऑफ बिस्मथ कैलकुलेट किया, क्योंकि 250 ग्राम कैडमियम जो है वो मास ऑफ बिस्मथ से डेफिनेटली कम है क्योंकि उसका परसेंटेज भी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो ज्यादा परसेंटेज में है उसको कैलकुलेट किया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑल्सो यू हैव टू सी वेदर व्हाट इज इन मोर परसेंटेज, तो जो मोर परसेंटेज में रहेगा उसी को कैलकुलेट करना है। सी now in this question 730 gram of tin is present, 270 gram of lead, ठीक है। तो यहाँ अभी हमें किसके टर्म्स में कैलकुलेट करना है, 270 ग्राम ऑफ लेड और 730 ग्राम ऑफ टिन? 270 70 gram of Correct. lead. Correct. This is what we are doing here. So corresponding to this 270 gram of lead, we are supposed to calculate the mass of tin, which is in more percentage. तो ये एक क्लू है जो आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप वाइस वर्सा करोगे तो आपका चेंज हो जाएगा। So calculate and tell me. No, no. ये तीन का 480 मास grams. Yes, that's right. We get the answer as 480. That is 270 gram of lead into 64% of tin. Opposite में जाएगा, lead का gram और 64% of tin divided by lead का percentage, which comes to around 480 grams of tin. मैम हाँ 270 into 36 by 64 होगा ना? no. See here, lead will not multiply with lead. The same component will always get divided. Previous numerical में भी देखो, cadmium was multiplied, 250 gram of cadmium was multiplied with the percentage of bismuth and divided by 40% of cadmium. ये सब आपको ध्यान में रखना है। ओके मैम। और मैम 1 kg लेना है क्या एलआई? हाँ हमेशा? यहाँ पे हाँ 1 kg, अगर वो स्पेसिफाई करते हैं 2 तो आप कर सकते हो, जैसे कि है आगे क्वेश्चन जहाँ पे 2 kg ऑफ एलॉय भी लिखा है। So what is the eutectic, students? 480 75 480 plus 270. Which is 750 gram of 750 gram. eutectic. 750 gram of Eutectic. Correct. All are getting these values? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Moving on to the third one. Yeah. Take down this. Now this is 2 kg of alloy, huh? First write down the question. What is the question? In an alloy of bismuth, which is written as Bi, and cadmium, Cd, contains 20% cadmium. Determine the mass of eutectic in 2 kg of the alloy if eutectic contains 50% of cadmium. Okay. Write down the question. तो वहां पे जहाँ पे 2 kg है, जहाँ पे हम पहले 1 kg होता तो we used to write 1000 gram. There you have to write down 2 kg. So just check out with how many grams. Do it on your own. I'm not going to share the further answer. After when you do it, then we will discuss.
बस याद रखो कि कौन सा परसेंटेज कम है, कौन सा ज्यादा है। जिसका परसेंटेज ज्यादा रहता है रू टेक्निक में उसी का मार्क्स फाइंड करना है। एट हंड्रेड आ रहा है मैम फाइनल। फोर हंड्रेड। 800 आ रहा अच्छा टोटल है 800। टोटल। गलत किया होगा। एट 800 is the right answer, huh? Do it step by step. सेम प्रोसेस, सेम ट्रिक उसको अप्लाई करो। जो कम क्वांटिटी में है और जो ज्यादा परसेंटेज में है उसका मास फाइंड करो। मैम वो करस्पॉन्डिंग में देखो फाइंड करते हैं, मतलब जिसका करस्पॉन्डिंग लेस टू होता है। 400, हाँ 400 ग्राम हाँ तो कैडमियम। मतलब अभी उस उधर मैम जो ऊपर जो 50% है वो इसका है ना, बिस्मथ का है ना। करेक्ट, लेकिन ऊपर देखो ना 20% कैडमियम है, मतलब बिस्मथ इज बाय डिफॉल्ट मोर ना। हाँ दैट इज द रीजन वी आर फाइंडिंग द मास ऑफ बिस्मथ। So in the new technique, you will get 400 gram bismuth, which we are supposed to add. हाँ बोलो बेटा। मैम हमको आपकी यूट्यूब की लिंक चाहिए थे। हाँ वो मुझे एक्चुअली मैं आपको लेकिन क्लासरूम में शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग रेफर जी कर मैम। रहे हो कि नहीं? क्लासरूम, गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड द वीडियो लिंक्स ऑफ एवरी, मतलब जो जितने भी लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग हुआ है वो मैंने शेयर किया है। आपने किसी ने देखा क्या? वो टाइम लेता है मैम, यूट्यूब का दे दे तो अच्छा रहता है। ठीक है, यूट्यूब का भी दे दूंगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन मुझे अभी वो डालना है वो सब वीडियोस यूट्यूब में, तो आई विल शेयर इट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। मैं करती हूँ, ठीक है। मे बी बाय टुडे इवनिंग और टुमारो आई विल शेयर ऑल द लिंक्स, यूट्यूब का लिंक, ठीक है। मैम जो मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर होंगे उसका हम लोग को जीसी पे अपलोड नहीं करना होगा ना? नहीं 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 नहीं, नॉट एट ऑल। आपको बिकॉज लिंक भी हमारे जीसी में मतलब होता ही नहीं है, हम मतलब हमारे फ्रेंड से सब क्यों करवा रहे थे जीसी का। क्यों पता नहीं मैम। आपने जीसी का ऐप डाउनलोड नहीं किया? यस मैम, हम मतलब हमारा सब कुछ राइट चलता है बट हमारे मोबाइल में नहीं ओपन हो पाता है। वो सपोर्ट नहीं करता होगा। यस मैम। आपके अननेसेसरी कुछ ऐसे एप्स होंगे ना, उनको सबको आप अनइंस्टॉल कर दो, मे बी उतना रैम नहीं होगा, व्हाटएवर, ठीक है। मैम बहुत मेमोरी है भी उतनी नहीं स्टोरेज होगी। वगैरह। हाँ है मैम बहुत, वो पता तो नहीं बस, सपोर्ट ही नहीं करता है कॉलेज के आईडी को। बट वो दूसरे डिवाइस से हो जाता है तो हम फिर वैसे ही करते हैं। अच्छा नहीं, आपको आंसर शीट अपलोड नहीं करना है गूगल क्लासरूम में, बिल्कुल भी नहीं करना है। द लिंक विल बी शेयर टू यू, वो लिंक में ही सब आंसर्स चाहिए। बस आप लोग प्रॉपर नेटवर्क में रहना है और आपका फोन रिचार्ज रहना चाहिए विद मोर एमबी। स्टूडेंट्स डन? यस मैम। ओके,
So this is one type of expected question for eutectic composition. Okay, now we will do the second type. Write on this question. 1000 kg of a sample of argentiferous lead containing 0.1% silver is melted and then allowed to cool. If eutectic contains 2.6% silver, what will be the mass of eutectic formed, and how much amount or how much mass of lead will separate out? Write down this question. Done with the question? न्यूमेरिकल आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट टाइप है, बट आंसर इज वेरी, द सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल. नाउ व्हाट दे आर टेलिंग, इन द क्वेश्चन, 1000 kg of the sample of argentiferous lead. argentiferous lead alloy है, वो 1000 kg का है, जहां पे उसके अंदर 0.1% silver is melted and then allowed to cool. So now the eutectic जो उसके अंदर present है, जो form हुआ है in equilibrium, it consists of around 2.6% silver. So they are asking us what will be the mass of eutectic and how much amount of lead will separate out. ठीक है? Now as we do it in the same manner, let us find out the mass of silver that is present in 1000 kg, because they have written 0.1% silver is present in 1000 kg of the argentiferous lead. Okay, so this is what is written in point number 1, mass of silver present in 1000 kg argentiferous lead. So it is 0.1%. 0.1% means 0.1 upon 100 into 1000 kg. हाँ, ये 1000 kg को ग्राम में कन्वर्ट नहीं किया है, वो 1000 kg है. So the answer comes to around 1 kg. Now, when this was melted, it consists the eutectic composition. So what is the mass of eutectic? So already we have 1 kg of silver present in 1000 kg of alloy. So 1 into 1000 kg of alloy divided by 2.6% silver, which comes to around 384.6 kg. ठीक है, ये जो 384.6 kg है, ये सिल्वर का है जो यूटेक्टिक में मास ऑफ यूटेक्टिक में प्रेजेंट है. So how much amount of lead will separate out? It is 1000 kg of the sample minus 384.6, which comes to around 615.38 kg of lead, which is separating out. ठीक है? यूटेक्टिक फॉर्म एक बार फिर से रिपीट करो ना, समझा नहीं. ये समझा, मास ऑफ सिल्वर इन 1000 kg alloy हाँ वो समझ. आर्जेंटिफर. हाँ ठीक है. अब विद रेफरेंस टू दिस 1 kg जो कि कम है, ठीक है, जो कि लेड से कम है, तो विद रेफरेंस टू दिस हाउ मच eutectic is given? 2.6% silver is given in the eutectic, and they are telling us to calculate the mass of eutectic directly. So mass of eutectic is equal to ये 1 kg of silver जो 1000 kg सैंपल में प्रेजेंट है. So 1 kg of 1000 means 1 into 1000 divided by how much silver is present in eutectic, that is 2.6.
तो उसको डिवाइड करो, 1000 divided by 2.6, you will get 384.6 kg. This much is the mass of eutectic. ठीक है. अब जो excess silver, excess lead जो उसमें रहा होगा, that separates out. So what is the mass of lead that separates out? 1000 kg of the alloy minus 384.6 of eutectic is equal to 615 kg of lead will separate out. ठीक है. Write down this. मैम Yes. मैम एक क्वेश्चन Yeah. कितने मार्क्स? ये आएगा 3 to 4 marks. मैम हम्म. ये यूटेक्टिक कंटेंट्स फाइंड किए ना ऐसा डायरेक्ट, वो अपन ने पहले मेथड से फाइंड किया, मतलब kg का 2.6 है, मतलब बाकी का 97.4 उसका होगा लीड का, हम्म. तो मतलब उससे भी आंसर सेम ही आएगा क्या? करके देखो, मेरे ख्याल से कुछ डेसिमल डिफरेंस आ सकता है, because eutectic is consisting 2.6% silver, so remaining is तो मैम वो 97.4. 2.6% भी निकालना पड़ेगा ना उसके लिए कि नहीं, ये 1 kg लेंगे? नहीं, ये डायरेक्ट ऐसे करेंगे तब भी चलेगा. नहीं मतलब अभी ये बट मैम तो आने बोला ना, मतलब पहले जैसे किए थे प्रॉब्लम, अभी यूटेक्टिक में जैसे 2.6% दिया है तो मतलब उसको कंसीडर करके ही लेंगे ना. नहीं तो फिर वो 1 kg को 1000 ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना. गिवन है ना. देखो एक मिनट, हाँ मैं बताती हूँ. नहीं, उसमें उसको ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये now see here, if eutectic contains 2.6% silver, यहाँ पे lead कितना separate out हो रहा है वो लिखा है. mass of lead calculate करने बोला है कि वो eutectic में कितना है, वो excess lead कितना separate out हो रहा है वो बोला है. तो that is the reason we are doing it in this manner. ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझ के लेना है यहाँ पे. हाँ, see here, ये वो वन फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था. यू आर टेलिंग कि अगर हम इसको 97.4 into this 1000 ग्राम करेंगे, somewhere decimal error will come, otherwise not a big error, answer will be the same. ठीक है. अब ये 384.6 को इसमें कन्वर्ट करो आप ग्राम में. थ्री 384600 38,400. so it will better with the this gram and kg. ठीक है. So that 1000 is, ग्राम से ही हो रहा है. हाँ 1000 ग्राम में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये 1000 kg को कन्वर्ट करना पड़ेगा. You know, all that conversion will be there. Answer will be almost 1000 the का same, डिफरेंस but आ जाएगा. decimal, yes, decimal error will come over here. So it is better to do it in this manner, because here they are not asking the mass of lead. They are asking how much mass of lead will separate out after the eutectic has been found.
So that is the reason no we are subtracting. पहले हम लोग प्रीवियस टाइप 1 में हम मास ऑफ लेड ही कैलकुलेट कर रहे थे कितना होगा करके, यहाँ पे हम माइनस वगैरह कुछ नहीं कर रहे थे, डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर रहे थे फिर उसको ऐड कर रहे थे, बट दिस इज नॉट द सेम टाइप. Then shall I change the slide? Write down the second question now. Done? Let us read the question now. 100 kg molten alloy of lead silver contains 0.3% silver that is cooled to form an eutectic mixture with 2.6% silver. Calculate the amount of silver that can be recovered from the eutectic mass and mass of lead that separates out. ठीक है, जो है हमारे पास में, we will do that first. Same way, mass of silver present in 100 kg argentiferous lead. How much mass you're getting? 0.3. Yeah, 0.3 kg silver. Now eutectic contains 2.6% silver. So what will be the mass of eutectic? Do it in the same manner. 11.53. Yeah, 11.538 kg as we did in the previous numerical. Okay. Now they are telling to calculate the mass of lead that will separate out. तो 100 kg alloy है, उसमें से ये 11.538 को आप माइनस करो. 8.6. 46. ठीक है, same method. Generally in the exam, the type 1 numerical is asked. Students, have you done? Yes, ma'am. I'm just looking for links.
Okay. Let's move on with the next one. Yeah. Write down the next question. Let me see how many numericals are there. We have done the sixth one, no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now the last one, seventh one. Yeah. Yeah. Write down the seventh question. Same way, same method. $10.76 or final. Yeah. Let other people do it. Then I will disclose the answer. What is the question? 100 kg molten alloy of lead silver contains 0.28% silver that is cooled to form an eutectic mixture with 2.6% silver. Calculate the amount of silver that can be recovered from the eutectic mass and the mass of lead that separates out. So all are getting this 0.28 kg silver. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 10.79. Yes, ma'am. And what is the mass of lead? 9.24. 10.76. No, mass of lead I am talking about. 89.24. 89.21. 9.24. Yeah. So these are the two different, please mute yourself. These are the two different types of numericals under the two component system for eutectic composition. So you should be very well, able to do it properly. Okay. So here we complete with our almost 100% syllabus. ये numerical सबने copy किया? Yes, No, ma'am. ma'am. Yeah, please copy it. Hello, have you done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमारा फेज पूरा हो चुका है अभी, ठीक है। और intermolecular forces, this notes is already shared, okay। उसमें से आपको ये पार्ट जो है क्वेश्चन बैंक में मैंने डाला है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, this, okay। Only one question is there where you have to study.